Welcome all. Am I audible? Let me check. Let me check once. Am I audible? Can you hear me? Voice आ रहा है ना? Good evening. Good evening. Good evening. Right. Evening. Right. Let me share certain things with you. Point number one. This is my 25th year of teaching. And I always worked for the welfare of students. I never cheated my students. I never cheated my students. Point number one. This is my 25th year. Wherever I took classes with commitment, with full dedication, I worked. And I never played any politics with anyone. Now I am openly talking certain things. I never played politics with anyone. But unfortunately, certain things are happening against me, and I don't tolerate such things, and I'll come out with redoubled efforts for the welfare of students. And people are talking about my energy level. So shame, I am telling you. So I'm there to teach even for 12 hours a day with full enthusiasm. People started counting my energy levels. Shame, shame. I never played politics with anyone, but unfortunately certain things are happening. So fortunately all the things are sorted out, and now I'll focus only on the welfare of students. Now I'll focus only on the welfare of students, and you are now going to see my energy level. And it is on the request of students I am coming on YouTube. I never came of my own. It is on the request of students. My old students said, sir, we have our subscription ended. हमारा subscription खत्म हो गया, तो हमारे लिए कुछ करो ना YouTube पे, इसलिए आ रहा हूं सर. I have no personal motto. Unfortunately, देखो क्या होता है ना, सो जो आपको फॉलो करके आपके शू में आके फिर आपको ही क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं लोग. Very sad, I am telling you. And please, now I am telling you only one thing, ki I am born to teach. I will teach till the end of my life. I will teach till the end of my life. And don't make any expectations ki I am leaving this platform. Point number one is very clear, ki I am not leaving because things are sorted out. And I am on this platform only for two reasons. One, it is the freedom. I took that freedom always as a responsibility. Second, self-respect. If these two things are lost, I will not stay. I am making it very clear. So they are protecting this. So due to certain things, anyway, they are protecting. So I have no problem. So I'll take additional subjects also. I will take additional subjects also, and for your welfare. I am there this year. I will come with redoubled energy. मैं दुगना एनर्जी से आऊंगा सर. और मेरा एनर्जी लेवल पे थोड़े लोग क्वेश्चन किए. अब बताता हूं एनर्जी लेवल क्या होता है. बुरा क्या लगता है ना, लोग कॉपी करके और मुझे ही दबाना कोशिश सोच रहे. बहुत बुरा बात है. पूरा 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 कहां से शुरू हुआ, एक बार सफर देख लेना. वेरी सैड, वेरी सैड. सो अब रूटीन क्लासेस चलेंगे, प्लस पे ले लूंगा और यूट्यूब पे ले लूंगा सर. एंड आई विल वर्क मच मोर हार्डर, बिकॉज अब मेरा जुनून ख्वाहिश और बढ़ गया सर, और बढ़ गया सर, और बढ़ गया विथ और एंथुसियाज्म. आई विल टीच यू, आई एम टेलिंग यू. अब एनर्जी लेवल होता क्या है देखेंगे. एनर्जी लेवल होता क्या है अब देखेंगे. एंड आज कितने मैसेजेस आए, वेदर इट इज गेट मैकेनिकल,
केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, आई विल शो यू हंड्रेड्स ऑफ मेसेजेस, सर मैथ्स 13 आउट ऑफ 13 स्कोर कर रहा हूं, सर मैथ्स 13 आउट ऑफ 13 स्कोर कर रहा हूं। तो मेरा मैथ्स देख के कितने लोग तारीफ किए, और मेरा मैथ्स लेने के लिए लोग कितना वेट किए, एंड हमारे कोई साइड लाइन करना चाह रहा है थोड़े लोग, बट दैट विल नॉट हैपन, आई एम टेलिंग यू। पेटी पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है। सो विथ हाई एंथुजियाज्म आई विल वर्क, आई एम टेलिंग यू। बहुत जबरदस्त एंथुजियाज्म से पढ़ाऊंगा सर आपको, जबरदस्त एंथुजियाज्म से और ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। एंड प्लीज, बिकॉज थिंग्स, आई एम सो थैंकफुल टू Unacademy फॉर अगेन लाइक टेकिंग माई लाइक जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है सॉर्टेड आउट एट द अर्लीस्ट। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो डेफिनेटली आई एम देयर टू सपोर्ट यू। और मेरा नया सब्जेक्ट जो मैं कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, ये पहले करेंगे, थर्मो हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन विल एज आई प्रॉमिस्ड यू आई विल बी टेकिंग सम मोर सब्जेक्ट्स। सो डेफिनेटली इस बार एडिशनल नए सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, सो डोंट वरी। So all these with redoubled enthusiasm, I am there to support you. I am there to support you. Yes, yes, yes. जो नए सब्जेक्ट्स वादा किए वो होंगे सर, डोंट वरी। अभी कुछ पूछना है सर? बिकॉज लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि हम नाटक करते हुए आपका टाइम बर्बाद करने के लिए कभी यूट्यूब पे नहीं आए, कभी नहीं आए। सो अभी स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी कुछ है पूछने का? सी प्लीज, ओके। सो आई एम देयर फॉर योर वेलफेयर, लिख के रख लेना। हम झूठे वादे करके भागे नहीं, हम नहीं भागेंगे भी। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, आपको जो किए वो सेटिस्फाई करेंगे। एनीथिंग मोर दैट यू वांट टू आस्क? बार्क के लिए ऑलरेडी हम थर्मो का शुरू कर रहे हैं, थर्मो के बाद एचएमटी, एचएमटी के बाद फ्लूइड, फ्लूइड के बाद एज आई सेड इंजीनियर मैकेनिक्स स्टॉर्म, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल। ओके, एनीथिंग मोर? एनीथिंग मोर? ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग हियर। अभी कुछ पूछना है सर? यस, दैट्स सॉरी सॉरी, देखो थर्मो के बाद एचएमटी, एचएमटी के बाद सॉम, सॉम के बाद फ्लूइड, फ्लूइड के बाद मैकेनिक्स स्टॉर्म, एंड देन विल टेक इंडस्ट्रियल। दिस वाज द प्रॉमिस, आई थिंक दिस वाज द सीक्वेंस। एग्जैक्टली, एक्सेप्ट मैं कन्वर्जेंस छोड़ के, एक्सी के लिए पूछ लेना, एक्सेप्ट कन्वर्जेंस छोड़ के बाकी का सब कवर किया इस बार, वो भी मैं कोशिश करूंगा, जो सीरीज है कन्वर्जेंस सीरीज का। और कुछ सर? एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले सर, जो मैं यूट्यूब पे लास्ट में आई हैव टेकन मैराथन सेशंस ऑन लाइक थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एक बार क्वेश्चंस देख लेना। और कुछ? एंड यू नो, अभी अभी, अभी अभी, जस्ट नाउ माई स्टूडेंट, जस्ट नाउ आके मिलके गए, पता है कौन है? ही गॉट आईईएस थर्ड, ही गॉट ऑल इंडिया थर्ड रैंक इन आईईएस, अभी आके मिलके गया, अभी आके मिलके गया। आई शो यू जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते ना सर, बिकॉज हमें एडवर्टाइजमेंट करना नहीं आता है। इधर देखो, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जो भी मिले उनको भगा के बुला के लाके इंटरव्यू लेना हमें नहीं आता सर, सॉरी सॉरी। जस्ट नाउ ही गॉट ऑल इंडिया थर्ड रैंक, ऑल इंडिया थर्ड रैंक इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ही इज शेयरिंग हिज जर्नी। तो बहुत सारे चीजें करेंगे सर, डू नॉट वरी एट ऑल, एंड मैं आपको सपोर्ट कर किया है, करूंगा। और कुछ सर? एनीथिंग मोर? डेफिनेटली आई विल टेक सर, डेफिनेटली आई विल टेक सर। ठीक है, इज इट ओके? अभी कुछ पूछना है सर? और एक बात बोल रहा हूं सर, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वेस्ट टॉक्स, उधर इधर की बातें मत करना, वेस्ट टॉक्स में मत जाना, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि ना बहुत देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, सो प्लीज डोंट डू दैट। और कुछ सर? अभी बताया सर? यस,
सो अभी थोड़ा आप बार्क पे फोकस करेंगे, स्ट्रैटेजी करके अब हम स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट लाइक so I'll be taking new courses on plus. Do not worry about that. Already मेरा सॉम चल रहा है, मशीन डिजाइन दोनों भी चल रहे हैं, और कल सुबह मेरा मशीन डिजाइन है, ठीक है ना? यस यस यस. और कुछ सर? I have no plan of starting my own institute. As long as my self-respect and my freedom is retained, I'll be here. जिस दिन ये दोनों जाएंगे, I will not stay anywhere. ये तो मैं क्लियरली बता दिया. तो yes, they are respecting me, I am respecting. बस, it's mutual. ओके, सो लेट मी, अभी कुछ पूछना है सर बिफोर वी एंटर द सब्जेक्ट? आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चंस लाया सर. आई ब्रॉट वेरी गुड क्वेश्चंस. ओके, सिलेबस फॉर बार्क इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर गेट. तो मैथ्स भी रहेगा, एप्टीट्यूड नहीं रहेगा. तो और कुछ सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इंटरव्यू क्वेश्चंस एक बार क्लियर होने दो सर, एक बार क्लियर होने दो. और कुछ सर? एक बार क्लियर होने दो सर, एक बार क्लियर होने दो सर. आई एम देयर टू सपोर्ट यू, आई एम देयर टू सपोर्ट यू. ओके, और कुछ? आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चंस लाया सर. आई ब्रॉट वेरी गुड क्वेश्चंस. ओके, एनीथिंग मोर? हाँ, अब बार का विल स्टार्ट सर. मैथ्स भी रहेगा, एप्टीट्यूड नहीं रहेगा. मेरी ट्रेन है. ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल. यस, थर्मो वाले सेशन के कुछ क्वेश्चंस आए एक सी में. यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और कुछ? अभी कुछ पूछना है सर? शैल वी स्टार्ट? ओके ओके, अभी विल स्टार्ट सर. चलिए चलिए, बार्क देखो, लेट मी टेल यू क्लियरली. 100 क्वेश्चंस में बार्क इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. It's not possible for you to do all the questions in a given time. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आप ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करो, यू सेलेक्ट सच क्वेश्चंस. 40 क्वेश्चंस जो आते हैं, ये लास्ट सेशन में भी बोला था, 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस जो आते हैं ना, पहले वो कंप्लीट कर लेना. 40, whatever 40 क्वेश्चंस यू नो, यू कंप्लीट. whatever 40 क्वेश्चंस यू नो, यू कंप्लीट दोस. उसके बाद बाकी के जो 20 क्वेश्चंस है ना, I mean, it is 100, but 40 questions you try to complete. 40 complete कर लेना. So बाकी के 20 questions आप see that you do it very neatly. So if you try to do around 60 questions properly, there is a fair chance, sir. Okay? ONGC, ये कौन है रे, मंकी वाले? तो बार्क के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप 40 क्वेश्चंस किसी तरीके से पहले कंप्लीट करेंगे. अराउंड वन आवर 10 मिनट्स में यू ट्राई टू कंप्लीट 40 क्वेश्चंस. रिमेनिंग आप कोशिश करना. इज इट ओके? शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट सर? हाउ टू डू लिमिटेड एंड गुड क्वेश्चंस? यस, आई एम टेकिंग न्यू क्वेश्चंस सर. सो स्टार्ट करें सर, प्लीज. एंड वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, जो आए सिंसियरली पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो प्लीज लीव. बिकॉज हियर सिंसियरली आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू फॉर योर वेलफेयर. यही तो काम है मेरा. इज इट ओके सर? फॉर योर वेलफेयर. स्टार्ट करें सर? स्टार्ट करें सर. ओएनजीसी का मैं देखूंगा सर, मुझे भी उतना क्लैरिटी नहीं है. इज इट ओके? लेट्स स्टार्ट. एनीथिंग मोर? लेट्स स्टार्ट. चलो, टेक दिस. So one more thing sir, बार्क में there are some lengthy questions. गेट लेवल से थोड़ा ऊपर होते हैं, गेट लेवल से थोड़ा ऊपर होते हैं. बार्क में there are some lengthy questions, गेट लेवल से ऊपर होते हैं सर थोड़े क्वेश्चंस. तो वो भी कर लेंगे हम. एंड जो गेट के लेवल के होते हैं थोड़ा हल्का सा कम लेवल के होते हैं, लेट्स डू दोस क्वेश्चंस. मतलब यहीं पे पूरा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. कीप योर कैलकुलेटर्स रेडी, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, बिकॉज कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन योर बार्क एग्जामिनेशन. रेडी है सर सब लोग? थोड़ा सिंसियरली, रिलीजियसली सेशंस को फॉलो करना सर.
तो मैं तो कमेंट्स देखूंगा ही नहीं, स्पैम करो कुछ भी करो, आई डोंट केयर, मेरा काम है आपको पढ़ाना। इज इट ओके सर? तैयार है आप लोग सर? तो अगर आप रेडी है तो मैं स्टार्ट करूंगा सर। माय कोर्स, माय सीक्वेंस इज लाइक थर्मो करवाऊंगा पहले, उसके बाद HMT, सॉम, देन EM टॉम, देन इंडस्ट्रियल। इज इट ओके? लेट्स स्टार्ट। चलो, टेक दिस। द फिगर इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। कहां गया? नेक्स्ट स्लाइड में है सर फिगर। हाँ जी सर, देखो, रीड द क्वेश्चन। अरे यार, वर्चुअल कैलकुलेटर इज अलाउड ना, लास्ट ईयर से अलाउ किया है। हाँ, यस यस यस, अलाउड, इट्स अलाउड, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। ए वर्क, प्लीज सिंसियरली क्वेश्चन को रीड करो। एंड वन मोर थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यू मस्ट बी सिंसियर एंड रेगुलर टू दीज सेशंस। सो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होगा आपको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल बी एन एडवांटेज टू यू। ठीक है सर? चलो, हाँ, देखो कैलकुलेटर इज अलाउड ना? यस विराट, आई एम टेकिंग। यस, अलाउड है, इट्स अलाउड। चलो, a vertical frictionless piston cylinder arrangement contains air of 1 kg, contains air of 1 kg. During a process, 50 joule of heat is transferred from outside to the system such that the piston is raised slowly by 0.1 meter from its initial equilibrium position. क्या बोला है? There is air in a container, piston cylinder arrangement. Air is heated and 50 joule of heat is transferred to air, and the mass of air is 1 kg. Once the heat is transferred, the piston rises by 0.1 meter. Okay, from the initial position. The mass of the, एक बार सर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, let us work sincerely for our own welfare. Okay, right? चलो, नो इन्हें द मास ऑफ द, देखो देखो, यहां पे पिस्टन मास इज ऑल्सो गिवन, piston mass is also given, and the diameter is 0.1 meter. Assume G as 9.81. The atmospheric pressure is 100 kilopascal. The change in internal energy of air in joule. ठीक है सर, एक्चुअली यू हैव मल्टीपल चॉइस MCQ रहते हैं, देयर इज नो नेट, तो मैं आपको फिल इन द ब्लैंक दिया, कोई बात नहीं सर। देखो क्वेश्चन क्या है, आर यू रेडी सर? देखो एक बार, देखो, there is a piston cylinder arrangement. In this there is 1 kg air है, and we are supplying heat, and because of that heat the piston is moving outwards, piston बाहर जा रहा है ऐसा। कितना डिस्टेंस गया सर? 0.1 मीटर। इट हैज मूव्ड बाय 0.1 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस? 0.1। ओके सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट इज ही आस्किंग? 50 किलोजूल, 50 जूल ऑफ हीट। जूल और किलोजूल एक बार देख लेना, 50 जूल और किलोजूल कहां गए रे वो? Where is that? Where is that? 50 joule of heat is transferred and thereby the piston is going upwards. तो पूछा है what is the change in internal energy. चलो, shall we start? So I know that it is a closed system. So therefore use the equation d dash q is equal to du plus d dash w. ठीक है sir. Now you know already this, and please see that all are in consistent units. सारे एक ही यूनिट में है। देखो, heat transfer is given as 50 because it is plus 50. Why? Because it is supplied to the system. When it is supplied to the system, it is plus. ठीक है sir. He is asking change in internal energy. To calculate the change in internal energy, I have to find out the work. हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? वर्क। तो आप बताओ कितने वर्क है सर? मैं बताता हूं। One is raising of piston, the other is displacement of atmospheric air. What is atmospheric pressure sir? The atmospheric pressure is given as 100 kilopascal. Let me check sir. Atmospheric pressure is given as, कहां गए रे वो? 100 kilopascal. ठीक है सर। तो बता सकते हैं सर कितना वर्क हो रहा है? कैन यू टेल व्हाट इज द वर्क? मैं बताता हूं सर, एक सेकंड, लेट अस कैलकुलेट। एक सेकंड, गैस प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा सर? डेफिनेटली वेरी सिंपल सर, PATM into A is the total downward pressure plus mg, mass of the piston, into g is the total weight of the piston. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, सो वेट ऑफ द पिस्टन डाउनवर्ड इज सपोर्टेड बाय दिस गैस प्रेशर, सो देयरफॉर P gas into A is the equation clear sir? क्या ये इक्वेशन क्लियर है सर?
क्या ये इक्वेशन क्लियर है? When nothing is said, we assume that it is in dynamic equilibrium. What does dynamic equilibrium mean? And it is moving at a constant velocity, so net force is zero. So therefore, what is this equation correct, sir? Yes. तो दोनों तरफ आप एरिया से डिवाइड करना, चलो डिवाइड कर दिए, तो आपको मिल जाएगा PATM plus mass of the piston G by A is equal to P gas. So you get the gas pressure, but please note down that units are very important. This is already in Newton. Let us take this as meter square, तो Newton per meter square, but this is given in kilopascal. तो इसको आप 1000 से डिवाइड करना, so that the gas pressure is in kilopascal. करो सर. P atmosphere is 100, if I am not wrong. 100 है ना? Yes. Plus piston mass is 1 kg. G is 9.81 and the diameter, piston diameter is 0.1. So pi by 4 into d square. So ये आ गया. लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक कर सकते सर. Look at what is that mistake. This is in kilopascal, this is in pascal, that is Newton per meter square. तो आप इसको 1000 से डिवाइड करना, तो you will get the gas pressure in kilopascal. क्या आप मुझे गैस का प्रेशर किलोपास्कल में दे सकते सर? वंडरफुल सर, वंडरफुल अभय, वंडरफुल अभय. तो क्या आप मुझे गैस प्रेशर दे सकते सर? एनीवन? एक सेकंड सर, आई विल टेक दिस. Gas pressure this 101.249. Very good, sir. So the gas pressure is 101.249 kilopascal. Exactly. So can I say it is a constant pressure process? बिल्कुल बोलूंगा सर. क्यों? The gas pressure is depending on atmospheric pressure. The gas pressure is depending on area of the piston. The gas pressure is depending on mass of the piston. None of these parameters are changing. कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, पिस्टन मास कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, सो गैस प्रेशर इज कांस्टेंट. सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर इट इज डिस्प्लेस्ड. सो व्हाट इज कांस्टेंट प्रेशर वर्क? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. एग्जैक्टली. कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है सर? ओरिजिनल वॉल्यूम ये था एयर का ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड फाइनली ये पूरा बन गया. तो कितना डिस्प्लेस हुआ सर? यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस हुआ. कैन आई से दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वाला ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड ये पूरा कंप्लीटली फाइनल वॉल्यूम. दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम और ये पूरा फाइनल वॉल्यूम. सो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? इट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू डिस्प्लेस्ड लेंथ. सो देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू पाई बाय 4 डायमीटर इज 0.1 का होल स्क्वायर इनटू 0.1. सो यू गेट दिस. तो कैन आई कैलकुलेट द वर्क सर? देखो यहां पे, सो द प्रेशर इज इन किलोपास्कल, तो क्या होगा सर? सो द वर्क इज गिवन बाय कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज 101.249. किलो में है तो 10 पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि आंसर जूल में पूछा है. तो किलो पास्कल इज 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड द वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब. ये वॉल्यूम मीटर क्यूब है, तो ये कट गया. न्यूटन मीटर इज जूल, तो ये जूल में आएगा सर. इनटू वर्क इज इक्वल टू प्रेशर. प्रेशर इज कांस्टेंट प्रेशर गैस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज पाई बाय 4 इंटू 0.1 स्क्वायर इंटू 0.1. तो क्या आप मुझे वर्क दे सकते सर? Can you give me the value of work, sir? 79. Very good, Abhay. 79.52. Excellent, sir. The work is given by 79.52. Excellent, sir. 79.52. एक बार वर्क आ गया, बाकी सब सिंपल है सर. इधर देखो, 50 is equal to, this is in joule, this is in joule, du plus 79.52. क्या मतलब है सर? फ्रॉम दिस यू गेट du as minus 29 point, कितना? minus 29.52. Anyone got this answer? Anyone got this answer? Very good, sir. I request everyone to involve in class. I request everyone to involve in class. Is the answer clear? Is the answer clear, sir? तो क्या हो रहा है सर? Physically let us understand. Physically let us understand. So compared to, देखो एक बार, even though heat is supplied 59 joule, but the work done is more. So where is that extra work coming? It is coming at the expense of internal energy. मतलब आपने 50 यूनिट्स ऑफ हीट को दिया, लेकिन 79.5 का वर्क हो रहा है, तो एक्स्ट्रा वर्क कहां से आ रहा है? ऑलरेडी वॉट एवर द सिस्टम हैड, सो फ्रॉम दैट इट इज कमिंग. सो दैट एज द एक्स्ट्रा एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम, एक्स्ट्रा वर्क इज कमिंग फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर द सिस्टम इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. इज इट क्लियर सर? क्या क्वेश्चन समझ में आया सर? अच्छा लगा क्वेश्चन? ठीक है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन. तो ऐसे इंटरव्यू में भी पूछेंगे आपको,
when heat is supplied, can the temperature decrease? So the working fluid is air. For air, which is an ideal gas, internal energy is a function of temperature, the Joule's law. So as the internal energy is decreasing, the temperature is also decreasing. क्या समझ में आया सर ये सबको? एक बार यो बोलो सब लोग, बोलो रे, क्लियर? ठीक है, ठीक है सर. ओके, वेरी गुड सर. टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. A closed system undergoing a देखो thermo words are very important. Thermodynamic cycle, okay, consisting of two reversible isotherms and two reversible adiabatic. कुछ याद आ रहा है सर? Which cycle consists of two isotherms and two adiabatics? Carnot. Correct? Carnot. Correct? Yes. So therefore, it is a Carnot cycle, and you know, it consists of 4 processes. Out of 4, 2 are reversible isotherms and 2 are reversible adiabatic, as shown in the figure. If delta Q is the very small, infinitesimal means very small heat transfer, and T is the instantaneous temperature, means at that time, then the value of delta Q by T is, पूछा है cyclic integral of dQ by T क्या है? ये कौन सा साइकिल है सर? आंसर दीजिए सर, आंसर दीजिए सर. देखो देखो एक बार, दिस इज द साइकिल सर, दिस इज द साइकिल, दिस इज द साइकिल सर. हाँ, ये एक्चुअली लाइक दिस. एक सेकंड, गलत है तो कोई बात नहीं सर. इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल. सो रिवर्स कार्नोट साइकिल, ओके, उल्टा है, द एंटी क्लॉकवाइज है सर. ये एंटी क्लॉकवाइज है तो रिवर्स कार्नोट साइकिल है. साइकिल तो रिवर्सिबल है, तो क्या होगा सर? फॉर व्हाट इज क्लॉसियस इनइक्वालिटी? Cyclic integral of d dash q by t is less than or equal to 0. Less is for irreversible and equality is for reversible. ये तो reversible है, तो आंसर is 0. Is it okay sir? चलो नेक्स्ट. मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा. मैं ग्रुप भी फॉर्म किया था सर. चलो कोई बात नहीं. टेक दिस, टेक दिस. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. थर्ड क्वेश्चन. Concepts are being checked. Come on, come on. Concepts are being checked. Consider an ideal rank. आप बोले थे थर्मो, application of thermo, दोनों साथ में चल रहे सर. Application of thermo cycles, and I asked you to revise. Okay, Rankine cycle as shown in the figure. देखो, this is the Rankine cycle. Isentropic compression, ठीक है सर. Sorry. आइसेंट्रोपिक, ये पंपिंग है. दिस इज अ पंप. मैं तो वीसी साइकिल की तरफ जा रहा था. चलो, पंपिंग ठीक है. कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड देन कंडेंसेशन. ठीक है सर. इट इज अ रैंकाइन साइकिल विच इज अ क्लॉकवाइज साइकिल. पूछा क्या है देखो. हाँ, द ओवरऑल एफिशिएंसी कैन बी इंप्रूव्ड बाय 4 ऑप्शंस आर गिवन. व्हाट इज द आंसर सर? द ओवरऑल एफिशिएंसी इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर. देखो एक बार, अगर हम, my dear students, if I increase the boiler pressure, what is going to happen? इधर देखो, if I increase the boiler pressure, क्या होगा सर? बोलो सर, क्या होगा? So पहले आप, you were adding heat from this temperature to this temperature. So what will be the mean temperature of heat addition? Somewhere here ऐसा होगा, somewhere ऐसा होगा. ठीक है सर. तो now आप यहां से हीट सप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन टू द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन? इट इज इंक्रीजिंग. पहले आप लो टेम्परेचर पे ऐड कर रहे थे, नाउ यू आर एडिंग एट हाई टेम्परेचर. सो द एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन व्हेन द लोअर टेम्परेचर इज नॉट चेंज. याद रखना सर, एफिशिएंसी इज गिवन बाय 1 minus T mean temperature of heat addition by mean temperature of heat rejection, lower temperature. So this is the mean temperature of heat addition. ध्यान से सुनो सर. अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ रहा है तो दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो नेगेटिव वैल्यू इज इंक्रीजिंग. देखो, व्हेन मीन टेम्परेचर 1 minus T lower, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, 1 minus T lower by Tm, exactly. So as the mean, I'm sorry, as the mean temperature is increasing, this value is decreasing. Negative decreasing means efficiency is increasing. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट बोलो, क्या बोला है? Decreasing the pressure at which heat is rejected. क्या हो, देखो एक बार,
व्हेन आई रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, तो टीएल को कम कर रहे हैं, व्हेन यू आर रिड्यूसिंग दिस वैल्यू विल डिक्रीज, जब ये इसको डिक्रीज कर रहा है दिस वैल्यू विल डिक्रीज, नेगेटिव डिक्रीज मींस एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग, सो एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज either by increasing the mean temperature of heat addition or by reducing the temperature at which heat is rejected. ठीक है सर, both are correct. अब देखो ये भी सही है, एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर एम्प्लॉइंग इंटरकूलर, इंटरकूलर कहां इंटरकूलर यूज करने से हो रहा है सर, यहां पे वेयर इज द इंटरकूलर, क्या कंप्रेसर है, नहीं ना, वेरी गुड सर. नाउ इंटरकूलर जो भी है इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इट रिजल्ट्स इन वर्क ट्रांसफर चेंजेस, ओके नो. और ये क्या है सर, सुपर हीटिंग, एग्जैक्टली. अगर हम सुपर हीट कर रहे हैं, लुक एट केयरफुली, इफ यू आर सुपर हीटिंग, क्या होगा सर, अगर हम सुपर हीट कर रहे हैं, यहां पे रोक के और सुपर हीट कर रहे हैं, द मीन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एज द मीन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इज आल्सो इंक्रीजिंग. इज इट ओके सर? बिल्कुल करेंगे अब्दुल रहमान भाई, बिल्कुल करेंगे. इज दिस ओके? राइट. एबीडी, एबीडी विलियर्स, ये पढ़ो एक बार. एबीडी ठीक चल रहा है सर? माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट गोइंग ऑन वेल? माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट गोइंग ऑन वेल? यस, ये करो. सो इसका एबीडी, व्हाट इज द आंसर? एबीडी. ठीक है सर, ये पढ़ो, आंसर दीजिए सर, आंसर दीजिए. विच वन ऑफ द, देखो देखो, द प्लॉट इज, ठीक है, हाँ, फॉर वेपर कंप्रेशन विथ इंटरकूलिंग, बोलो सर, वेपर कंप्रेशन विथ इंटरकूलिंग, हाँ हाँ, अभी ऑप्शंस है सर, अभी ऑप्शंस है, वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ इंटरकूलिंग, चार ऑप्शन. देखो देखो यहां पे पीएच डायग्राम है, P is on vertical axis and H is on horizontal axis. बताइए सर, व्हाट इज आंसर? सर सर ऑप्शंस पूरा देख लो एक बार, पूरा ऑप्शंस देख लो आप, प्लीज सी ऑल ऑप्शंस. आंसर दीजिए. सी, कहां पे सी है? बी केयरफुल. ओ हो, व्हाट इज हैपनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग सर? ना 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 ना, ओ माय गॉड, एवरीवन इज गिविंग ए. फंस गए, फंस गए, फंस गए सर. देखो, एटलीस्ट यू नो हाउ टू ड्रॉ वीसी साइकिल. एक बार देखो पीएच डायग्राम, isentropic compression, constant pressure heat rejection, throttling. Throttling is an isenthalpic process, then constant pressure heat absorption. This is my diagram, sirs. At least you know this. At least you know this. At least you know this, sir. Very good, sir. Sir. Intercooling क्या मतलब क्या है, sir? First you cool it in a compressor. First you compress in a compressor. First stage compression. Then cool it. देखो ऐसा होता है सर, look at carefully. You are compressing, देखो ये पहला कंप्रेस है, then you are cooling, यहां पे इंटरकूलर है सर, यहां पे कूल कर रहा है, अगेन इट इज एंटरिंग द नेक्स्ट कंप्रेशन सर, अगेन इट इज एंटरिंग द नेक्स्ट. तो इंटरकूलिंग इज अ कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस. आप जानते हैं सर, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, व्हाई आर वी कूलिंग द फ्लूइड इन बिटवीन? आप फ्लूइड को इन बिटवीन क्यों कूल कर रहे हैं सर? बिकॉज यू नो the kinetic energy is a function of temperature. So अगर fluid का temperature compress करते समय, when the temperature is increasing, when the temperature is more, the molecular activity will be more, so it offers more resistance for compression. अगर मैं cool करता हूं, so therefore the molecular activity will decrease and thereby the resistance offered for further compression will be less. So why are we using intercooling? To reduce the compression work. तो देखो सर, इधर देखो सर, अब डायग्राम देखो, सम लोग देखो, कंप्रेशन तो ये है 1 to 2 है, देखो एक बार, कंप्रेशन तो 1 to 2 है, कंप्रेशन के बाद कूलिंग. कूलिंग देखो, कंप्रेशन ऑन पीएच डायग्राम, ठीक है, इधर देखो सर, देखो एक बार, कंप्रेशन अप टू सम पॉइंट यू आर कंप्रेसिंग, ठीक है सर, देन इट इज कूलिंग. कूलिंग का मतलब क्या है सर? कांस्टेंट प्रेशर. सो कांस्टेंट प्रेशर इज हॉरिजॉन्टल बट इट विल बी लेफ्ट. अगर हीट कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर राइट जाएगा, ये कूल है.
दोबारा देखो, फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन इंटरकूलिंग, देखो सर, आई विल चेंज द कलर, फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन, then cooling, constant pressure process cooling, then again compression, so ये होगा constant pressure heat rejection, throttling on enthalpy diagram it should be vertical, then constant pressure heat absorption, ये होगा सर। तो ये कार्डून टाका, इसको आप निकाल देना सर। क्या ये बात सबको क्लियर है सर? Is this clear sir? Is this clear my dear students? Is the question clear? So answer is D। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सर, बी केयरफुल। ठीक लगा? से समथिंग रे, हैव यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक लगा? बहुत बढ़िया सर। सो द आंसर इज डी। द आंसर इज कंप्रेशन, कूलिंग, कंप्रेशन, constant pressure heat rejection, throttling. On pH diagram, throttling is isenthalpic process, तो vertical होना चाहिए, then constant pressure, so therefore D। Anyone got the answer as D? Anyone got the answer as D? Okay, ये करो। मूंगफली बोल रहा है, पहले सब लोग सी दिए, यही होता है सर। टेक दिस क्वेश्चन। ये करो। ऑलरेडी मैं ग्रुप फॉर्म किया हूं, उस ग्रुप में आई विल शेयर दिस। ऑलरेडी 4 days back, 3 days back आई formed a group and in that group I'll share। ठीक है, चलो। अच्छा, ओके। अगर आप टीएस डायग्राम पे लेते हैं, इफ यू टेक ऑन टीएस डायग्राम, देखो चलो पूछा है तो बताऊंगा, ओके, एट द एंड आई विल टेल यू। इफ यू टेक इट ऑन टीएस डायग्राम, because throttling is an irreversible process, you know the initial point, you know the final point, in between you don't know, so therefore हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, बट यहां पे डॉटेड पे क्यों शो नहीं कर रहा है? बिकॉज इट इज प्योर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, तो एवरी पॉइंट शुड पास थ्रू सेम एंथैल्पी लाइन, सो ऑल पॉइंट्स आर नोन टू मी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आई शेयर द ग्रुप लिंक सर। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है सर। ए 4 cylinder 4-stroke diesel engine operating at 3, तो सर sometimes more data will be given so as to confuse you। पर्पसफुली ये क्वेश्चन आपको दिया क्योंकि बार्क में कुछ लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन देख के डरो मत आप, ये कुछ है ही नहीं है सर। एक बात देखो, सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 cylinder 4-stroke आरपीएम, ये देखकर डर जाते हैं, डरना मना है। चलो ठीक है, देखो, हाँ, द कंप्रेशन रेशियो इज 12, देखो सर, द कंप्रेशन रेशियो इज 12, ओके, एंड cutoff ratio is 2.5, RC is equal to 2.5। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, द टेम्परेचर, हाँ देखो, द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द हीट एडिशन इज 2400। देखो देखो एक बार, लेट मी ड्रॉ द साइकिल सर, लेट मी ड्रॉ द साइकिल। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये शायद आपको समझ में आया होगा। सो ऑन पीवी डायग्राम, इज इट क्लियर सर? इज द साइकिल क्लियर सर? इज द साइकिल क्लियर? एक एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सर, करेंगे। ओके, नाउ ही सेज द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग हीट सप्लाई, heat supply is starting at 2, heat supply is ending at 3, 2 to 3 is the heat supply, and that is given by T3 minus T2. Can you tell the meaning of T3 minus T2? It is the rise of temperature during heat addition. The rise of temperature during heat addition is 2400 Kelvin. देखो, the temperature rise during heat addition is 2400. ठीक है sir, this is given as 2400 Kelvin. Can you tell the value in degree centigrade whenever it is temperature difference? Very good. Someone give the answer as 12. गलत है सर, गलत है सर जी, गलत है सर जी। Okay, now the efficiency is given by the, oh my god, he has given the equation of efficiency also। कितने किस्मत वाले हैं रे आप। He has given the equation of efficiency also। Assume that the working fluid has a mass flow rate of 0.5 and gamma as 1.4। चलो, the mass flow rate is given as 0. How much is the mass flow rate? 0.5 kg per second, 0.05 kilogram per second,
and gamma is given as 1.4. ठीक है सर. Now gamma is given as 1.4. Cp is 1.004. ठीक है सर. Cp is 1.004 किलोजूल पर केजी पर केल्विन. ठीक है सर. अब पूछा क्या है सर? द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इज. ठीक है सर. क्लू बताओ सर. क्लू बताओ. वेरी गुड. समवन सेड विजेंद्र प्रजापति हैज गिवन वंडरफुल 65.1. वाह, एक्सलेंट स्टूडेंट ऑफ इंडिया. बहुत अच्छा लगा सर. एक्सलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. देखो, लेट मी कैलकुलेट एफिशिएंसी. तो क्या करेंगे सर? एक बार बोलो. एफिशिएंसी लेके क्या करेंगे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू द नेट वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई. बोथ शुड बी इन कंसिस्टेंट यूनिट्स. इफ दिस इज इन किलोवाट, दिस शुड बी इन किलोवाट. इफ दिस इज इन किलोजूल, दिस शुड बी इन किलोजूल. ठीक है सर. नाउ my dear students, the efficiency of a diesel cycle depends on what and what? Compression ratio R and cutoff ratio RC. Can you tell me, with increase in compression ratio, what will happen to the efficiency of a diesel cycle? With increase in compression ratio, the efficiency will increase, because higher the compression, greater is the scope for expansion. So more work output for a given heat input. Then what will happen if the cutoff ratio is increased? अगर cutoff ratio बढ़ा रहा है तो efficiency घटेगा. रीजन भी बताया था, because heat rejection is occurring at constant volume, heat supply is occurring at constant pressure. As the slope of constant volume is more than the slope of constant pressure, heat rejection is occurring faster than heat. ये सब मैं क्लास में बताया था सर. ठीक है, कोई बात नहीं सर. चलो कोई बात नहीं. तो मैं बोल रहा हूं सर, he is asking net power. So if you want net power, somehow if I calculate these two things, अगर मैं efficiency और heat supply calculate करूंगा, problem solve हो जाएगा सर. इधर देखो. Can you give me the equation for heat supply, sir? मैं बताता हूं. It is supplied at a constant pressure. What is constant pressure heat transfer? mCp delta T, that is T3 minus T2. ठीक है सर. एक बार यूनिट की तरफ देख लेना. m is m dot दिया है, कोई बात नहीं, 0.05, and Cp is given as 1.005 and delta T is given as 2400. एक बार मैं यूनिट को चेक कर रहा हूं सर. This is in Kelvin. Cp is kilojoule per kg per Kelvin and mass flow rate is kg per second. तो देखो सर, केल्विन केल्विन कट गया, केजी केजी गया, तो किलोजूल पर सेकंड, दिस विल बी इन किलोवाट. कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ हीट सप्लाई सर? क्या कोई क्लास में हीट सप्लाई का आंसर दे सकते सर मेरे प्यारे दोस्तों? एनीवन विथ हीट सप्लाई? सर सर दीजिए सर. एनीवन हीट सप्लाई प्लीज? 120 पॉइंट. वेरी गुड शिवर नागर दुर्गा प्रसाद. 120.48. ठीक है सर. सपोज आई कैलकुलेट द एफिशिएंसी. इफ आई कैलकुलेट एफिशिएंसी, आई कैन कैलकुलेट द पावर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे. 1 minus 1 by r power gamma minus 1 into rc power gamma minus 1 by gamma times rc minus 1. ठीक है सर. चलो कैलकुलेट करो. Efficiency is 1 minus 1 by r. What is the compression ratio, sir? 12. Gamma is given as 1.4 into rc is 2.5. Gamma is 1.4 minus 1 by gamma is 1.4 into 2.5 minus 1. So please give me the value of efficiency. Please give me the value of efficiency. कितना आ रहा है सर? Anyone with efficiency? 0.54058. 0.54058. ये हमारा एफिशिएंसी है सर. एफिशिएंसी इज नोन, हीट सप्लाई इज नोन, लेट मी कैलकुलेट नेट पावर. एफिशिएंसी इज नोन, हीट सप्लाई इज नोन, लेट मी कैलकुलेट द नेट पावर. देखो, एफिशिएंसी इज 0.54058 इज इक्वल टू नेट पावर बाय हीट सप्लाई 120.48. अगर ये किलोवाट में है तो ये भी किलोवाट में होगा. तो कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ नेट पावर सर? एनीवन इन द क्लास? एनीवन? ओ हो सही है ना? क्या ये गलत है सर? ओ हो यहाँ पे एक सेकंड, सही पकड़े आप सही पकड़े. आई एम सॉरी सर, सही पकड़े आप. बहुत बढ़िया स्टूडेंट, अच्छा लग रहा है. 65.12. ही इज आस्किंग पावर, सो ये है पावर. सो द पावर इज इक्वल टू, एनीवन गॉट दिस आंसर सर? चलो कुछ टिप्स दे देंगे. अभी नहीं हुआ सर क्लास, प्लीज, क्लास इज नॉट ओवर, आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स. टिप्स क्या है सर? बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन,
जो इजी लग रहा है फटाफट सॉल्व कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। बार्क इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट 1 आवर एक 40 क्वेश्चंस जो आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना, काम हो गया सर। बाकी का 50 मिनट्स और 1 आवर जस्ट 20 क्वेश्चंस कर लेना, 60 क्वेश्चन सेफ जोन में आ जाएंगे। विल इट बी ओके सर? मैं आपको कुछ टिप्स भी बताता हूं, ठीक है सर? चलो, ठीक चल रहा है? सो इज दिस स्पेस ओके? ठीक है सर, ये पढ़ो, रीड द क्वेश्चन, पढ़ो सर, रीड द क्वेश्चन। आएगा सर, हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चन थोड़ा हम, लेट अस डू 2 to 3 सेशंस। once we complete 2 to 3 sessions then you will understand how to select questions, ठीक है सर? चलो, क्या 3.2? व्हाट इज 3.2 अंकित तोमर? ये 3.2 क्या है? नहीं समझा मैं, चलो ये ले लो, प्लीज टेक दिस। A new absolute temperature scale is proposed on a Carnot engine operating between hot and cold reservoirs of temperatures TL and TH. Chalo, respectively. QL and QH be the respective heat transfers with the relation given by, for a reversible engine, the efficiency depends only on temperature ratio. Already Q1 by Q2 is equal to T1 by T2. ये तो आपको पता है सर, चलो कोई बात नहीं, ओके। बोला क्या सर? इट्स अ गुड क्वेश्चन सर। दी स्टीम एंड आइस पॉइंट्स, देखो देखो क्या बोला, प्लीज कैच दिस क्वेश्चन, कैच दिस पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन steam and ice point is 500. The difference between steam and ice point, what is steam point? Higher temperature. What is ice point? Lower temperature. So TH minus TL, the difference between, देखो, he is framing at the thermodynamic temperature scale. So in that he is taking TH as steam point, in that he is taking TL as ice point. ठीक है सर? तो बोला क्या है सर? The difference between, देखो, the difference between steam point means higher temperature and ice point is lower temperature, that is 500, ठीक है सर? And one more is given, QH by QL is equal to TH by TL, ये भी दिया है सर, बहुत बढ़िया। One more information is given, the efficiency is given as 0.268, the efficiency is given as 0.268, the steam point of water on the scale is, steam point क्या है, मतलब TH पूछा है सर, कैसे करेंगे सर आप बोलो? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सर? एनीवन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो, one relationship between lower and higher temperature is known. Somehow if you can bring the relationship between lower and higher temperature by some other means, the problem is solved. 1865 is correct. देखो एक बार, देखो सर, एक सेकंड देखो इधर, एक सेकंड देखो सर, efficiency is given by 1 minus T lower by T higher. क्या मैं यूज दिस इक्वेशन सर? क्या मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं सर? ये तो केवल रिवर्सिबल के लिए, ऑलरेडी इट इज कार्नॉट विच इज रिवर्सिबल, तो आई कैन यूज दिस वेरी मच। तो द एफिशिएंसी इज गिवन एज 0.268, देखो 0.268 is equal to 1 minus T lower by T higher. So therefore T lower by T higher is equal to, इधर लाना, तो 0.732, am I right sir? 0.732। अब यहां पे पुट करना सर, T higher minus T lower. What is T lower sir? What is T lower? 0.732 TH, 0.732 TH। देखो T higher minus T lower is equal to 500. So I want the value of T higher. Anyone with the value sir? Anyone with the value sir? 1865, wonderful students of India। 18 कहां गया रे वो? 1856, 1865, yes। So the steam point corresponding units, because वो कोई यूनिट दिया नहीं तो corresponding units 1865 point something is correct, ठीक है सर? Hope you have understood this question। आ गया सर? Now the next question, बहुत आसान क्वेश्चन है सर, एक आसान क्वेश्चन ले लेंगे, एक आसान क्वेश्चन ले लेंगे। द साइकिल इज गिवन हियर, एक साइकिल दिया है सर, द हाइयर टेम्परेचर ही इज टेकिंग इट एज T2
and the lower is taken as T1. So it is isothermal heat supply and this is isothermal heat rejection. ये कौन सा साइकिल है सर, एक बार बोलो. What is this cycle, एक बार बोलो. ये वाला. On TS diagram it is clockwise. It is clockwise. Which cycle is this, sir? Carnot. Very good. So what will be the efficiency of Carnot? It will be 1 minus T higher by T lower. The simplest question of all. Higher temperature should be 600. T low. अरे क्या हो रहा है सर? पागल हो गए हम. पागल हो गए. पागल हो गए. 1 minus T lower by TR. I'm really sorry. So therefore 1 minus the lower is 200 and the higher is 600. So you are getting efficiency as 2/3. ठीक है सर? Simple है सर. जो percentage में पूछा है सर, percentage. So this is 0.6667 or 66.67%. So this is 66.67 is the right answer. Next question मजबूर करेगा सोचने के लिए. चलो करो. Next question करो सर. यही होता है सर. Some questions easy, some questions यही selection होता है सर. अब ये करो सर. ये करो. Come on, do it. Definitely सोचने में मजबूर करेगा सर ये क्वेश्चन. करो, देखते हैं सर. Please do it. Do it सर. देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर. करो, कंटिन्यूटी यूज करो, लेकिन मुझे आंसर चाहिए सर. करो, देखते हैं सर. जबरदस्त क्वेश्चन है सर. बार्क का लायक. Do it, sir. It's a very good question, sir. देखते हैं सर. देखते हैं सर. I am giving you 2 minutes. Are you ready? I am giving you 2 minutes. Are you ready? देखते हैं सर. How many of you can do this? नहीं, ये वाला करो रे. We'll see, sir. How many of you can answer? Let's see, sir. जबरदस्त क्वेश्चन है. In a converging duct, area and velocity at there are two sections P and Q. Okay, this is section P and this is section Q and the fluid is flowing like this. At Q तो ऐसा ले लेंगे क्या सर? P को हम 1 मानेंगे और Q को हम 2 मानेंगे सर. 1 2. Okay, so the area at 1 is given by 1 square meter and the velocity at 1 is given by 15 meter per second. ठीक है सर. The temperature is also given. How much is the temperature? 300. जबरदस्त क्वेश्चन है सर ये. Okay, airflow through the nozzle is assumed to be inviscid and isothermal. What does it mean? Non-viscous flow and isothermal. जबरदस्त है सर. Isothermal. The characteristic gas constant is given as 287 joule per kg per Kelvin. Gamma is given as 1.4. हाँ, ये सेंटेंस थोड़ा देख लेना सर, प्लीज. To ensure that the airflow remains incompressible, मतलब the flow is incompressible. Already I have derived in my compressible fluid flow on plus classes. So whenever the flow is incompressible, Mach number is less than or equal to 0.3. Very good, sir. और क्या बोला है सर? मस्त क्वेश्चन है सर. इसीलिए सोचना, नए क्वेश्चंस करेंगे. And the catch word here is minimum area. The catch word is minimum area required at the section Q. यहां पे चाहिए. Please, it's a request to all. Who said? Dilip. Excellent, Dilip. Excellent, Dilip. Excellent. Look at. Let me do this question, sir. जबरदस्त सर. बहुत बढ़िया सर. कुछ नहीं है सर इसमें. This is section 1 or P, rather I would say, and this is section 2 or Q, let us say. Here the area is given as 1 square meter
and the velocity is given and the temperature is given. I think the temperature is given as 300 Kelvin. And what is the area given, sir? It is velocity is 15 meter per second. Okay, sir. He is asking the area here. Already you know the flow is incompressible. You know, at any section, what is the mass flow rate? The mass flow rate is given by rho A V. Exactly, rho A V. So if you want at section 1, rho 1 A1 V1. And you know it is a steady flow. So therefore, whatever the fluid is entering, it should leave. So mass flow rate at every section should be same, rho 2 A2 V2. What is this, sir? It is the continuity equation for steady one-dimensional flow. But I have never said compressible or incompressible. So as it is steady, equate mass flow rates. Rho 1 A1 V1 is rho 2 A2 V2. Clearly क्या बोला है सर? एक बार देखो. Clearly क्या बोला है? Incompressible. To ensure that the flow is incompressible. Whenever the flow is incompressible, what will be the density? Constant. So therefore, density is constant incompressible. तो A1 V1 is equal to A2 V2. ध्यान से सुनिए सर. देखो एक बार. यहां का एरिया दे रखा है. ठीक है सर जी. एक बार देखो. यहां का एरिया is given. यहां का वेलोसिटी इज गिवन. तो आई वांट, व्हाट डू आई वांट? ये वाला चाहिए. सो टू कैलकुलेट A2, somehow I should calculate the exit velocity. But there is one small condition involved. वो condition को थोड़ा highlight करके देखना. What is that condition? Minimum area required. I have a question, sir. He is asking the minimum area at section Q. When will this area be minimum? And you know very well, this area will be minimum when the velocity is maximum. Agreed or not, sir? मुझे बता रहा हूं सर. ये वो बोल रहा है. एक बार क्वेश्चन को देखो सर. What is the minimum area required at section Q? यही होता है सर. Small words will torture you. So therefore, he is asking the minimum area here. Minimum area. So अगर area minimum चाहिए, what should be the velocity? Maximum. So if you want minimum area, the product is constant. As the product is A1 V1 A2 V2, this product is constant. So if area is minimum, velocity V2 should be maximum. यहां से कोई सजेस्ट कर सकते हैं, हाउ कैन आई प्रोसीड सर फ्रॉम हियर ऑन? मैं कैसे आगे बढ़ूंगा सर? कैसे? वेलोसिटी शुड बी मैक्सिमम. कोई हिंट दो सर. सोचो सोचो, थिंक. Think. Manish Madwal has given the answer as 0.14. It is absolutely correct. देखो मैं बताता हूं सर क्या करना है. देखो सर, Mach number is equal to V by sonic velocity, and the sonic velocity is gamma RT. किसी को याद है सर? The Mach number is given by V by gamma RT. Now I have a question. The fluid is flowing under isothermal conditions. So temperature is constant, R is constant, gamma is constant, denominator is perfectly constant. तो आपको area minimum चाहिए. When will this area be minimum? When the velocity is maximum. Already this denominator, it is flowing under isothermal conditions. Temperature is constant. So temperature is constant, R is constant, gamma is constant. ये सब constant है सर. तो अब बताओ सर, when will the velocity be maximum? This will be maximum when the Mach number is maximum. ये ब्यूटीफुल पॉइंट है सर. मैक नंबर इज मैक्सिमम. अब बताओ, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम मैक नंबर? क्लियरली बोला है, less than or incompressible flow is taking place. So Mach number should be less than or equal to 0.3. So what will be the maximum value? Less than or equal to 0.3. So maximum velocity के लिए Mach number should be maximum, means it should be 0.3. So take this as 0.3. So the Mach number is 0.3. Now I am calculating the velocity at the exit. So therefore, what is the exit? Gamma is 1.4, R is 287, and the temperature is given as 300. Some students may be asking question, sir, why have you not taken R as 0.287? Clearly, joule per kg is equal to meter square per second square. तो अगर आपको मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट चाहिए तो इट शुड बी इन जूल. ऑल दिस आई हैड एक्सप्लेन्ड इन माय क्लास. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर. व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग गामा के, आर शुड बी इन जूल पर केजी पर केल्विन. ठीक है सर. कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ V2 सर? एनीवन विथ V2? एनीवन विथ V2 सर? एनीवन विथ V2? 104.15. Excellent students of India.
This is absolutely correct. Very good, sir. Now, rest is area. What is A1? A1 is given as, देखो sir, 1. Velocity V1 is 15. A2 we do not know. And V2 is 104.15. So everything is known except A2. I think you are getting this as 0.144 square meter. अच्छा क्वेश्चन था सर. Is it not a good question, sir? कुछ तो बोलो सर. Sir, are you enjoying? Are you enjoying, my dear students? Exactly. Sir, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो. यही वाला था. अरे फिगर भी दिया था मैं अननेसेसरली. कोई बात नहीं. हाँ, टेक दिस. टेक दिस, टेक दिस. टेक दिस. अच्छा क्वेश्चन है सर. फटाफट करो. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. ये तो सिंपल क्वेश्चन है सर. इट्स देखो मैं यही बोल रहा हूं, बीच में इजी, बीच में टफ, बीच में यही होता है सर. धीरे से आफ्टर 2-3 सेशंस यू विल अंडरस्टैंड कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है. समझ गए ना? चलो. आइडियल गैस सीपी इज गिवन. देखो यूनिट नहीं दिया, जो भी यूनिट है लीव इट. इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम the initial temperature is given as 273 plus 25 is 298 Kelvin. And T2 is given as 273 plus 425. कितना आ रहा है सर ये? Is this correct? 698 Kelvin if I'm not wrong. Absolutely correct. No problem at all. तो क्या पूछा है सर? The change in entropy is. Exactly. You're right. You're right. Absolutely. Absolutely. Correct. अब देखो. Now देखो. You know, for an ideal gas, I gave you 3 equations in my regular class. I derived. क्या equation है सर? क्या equation है सर? देखो. S2 minus S1 is equal to Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1. This is one of the equations. What are the other 2 equations? एक बार recollect कर लेना. So other 2 equations are S2 minus S1 is equal to Cv ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. The third one is S2 minus S1 is equal to Cp ln V2 by V1 plus Cv ln P2 by P1. So ये तीनों. लेकिन यहाँ पे we need only this. Why sir? Because it's a constant pressure process sir. ठीक है सर. Okay. ओह गया देखो. अनडू करेंगे इसको. ठीक है सर. कोई बात नहीं. ओ माय गॉड, जो चाहिए वही गया देखो. कोई बात नहीं सर. Whatever is required that is gone. कोई बात नहीं सर. So let me write. So S2 minus S1 is equal to Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1. But already you know it is a constant pressure process. Whenever the pressure is constant, P1 is equal to P2. So P2 by P1 is equal to 1. ln P2 by P1 is equal to ln 1. Log 1 is 0. तो ये 0 हो गया सर. So therefore S2 minus S1 is equal to Cp ln T2 upon T1. What is Cp sir? 3.5 into ln T2 by T1. T2 is 698 and T1 is 298. So what is the value of delta S sir? Anyone with answer? Anyone with answer sir? What is the answer sir? B option दिया है? Option दिया है क्या? कहाँ है सर? 2.97, is it correct? 2.97 is the right answer. ठीक है सर. Absolutely fine. Okay sir? Right. चलो ये वाला ले लो. हाँ देखते हैं सर क्या आंसर करेंगे. ये वाला ले लो. The catch word should be बोलो.
Sir, I will give you theoretical questions also, sir. Theoretical also. Don't think that I am giving you only numericals, because BARC में theoretical questions भी आते हैं, sir. So let us focus on all round questions. ये करो. The theoretical maximum velocity of air expanding from a reservoir. The reservoir is at, there is a reservoir and its temperature, reservoir को हमेशा हम stagnation मानते हैं सर, it is at 700 Kelvin. Reservoir का मतलब the fluid is at rest. And what is he asking? So Cp is given as 1005. ठीक है सर, पूछा क्या है सर? 11, वाह बहुत अच्छा लग रहा है सर. क्या 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 बोला सर? In previous converging problem, temperature constant, so enthalpy drop is 0, and how the velocity at point Q is increasing. What did you say? In previous, the temperature is constant, ठीक है. How the, oh my god, you are taking only, look at my dear, h1 plus v1 square by 2 is equal to h2 plus v2 square by 2. ठीक है सर, correct? Plus there are other things ना. If you are applying, देखो ये क्वेश्चन ले लो, एक सेकंड. Where is it? यही वाला ना? You wanted this? This वाला? This one? This one? This one? हाँ. Correct? Look at sirs, please listen carefully. Area, specific volumes, they are changing. So please, hope you understood, sir. ये वाला ही? यही वाला? This one? हाँ. It means actually, so when can you equate when the temperature is change is 0, enthalpy change is 0? Directly can you equate velocities, because there are other parameters also ना. हाँ ये वाला लीजिए. हाँ ये वाला लीजिए. Take this. How to do this question, sir? देखो, h1 plus v1 square by 2000 is equal to h2 plus v2 square by 2000. ठीक है, कोई बात नहीं सर. What is the velocity? It is in the reservoir. तो इसका velocity क्या है सर? 0. जब velocity 0, इसको we call it as stagnation state. Reservoir को we call it as stagnation state. So therefore this velocity is 0. So can I write this as h0? Absolutely fine. तो देखो एक बार, Cpt1 plus v1 square by 2000 is equal to h0. So what is h0, sir? देखो एक बार, what is h0? h0 can be written as, my dear students, here h0 can be written as Cpt0. Now see the question. Already T0 is given as 700. Already T0 is given as 700. देखो एक second, देखो. He said theoretical maximum. When is this velocity? At least you know this equation. जब भी reservoir की बात करते हैं, it is at 0 velocity. We consider it as a stagnation state. From that stagnation state, it is the fluid is flowing. Expand होते हुए जा रहा है. मतलब अपने स्टैटिक स्टेट पे जा रहा है. तो h0 is h1 plus v1 square by 2. ठीक है सर, h0 is h1 plus v1 square by 2. ठीक है, कोई बात नहीं. Now you tell me, when will this velocity be maximum? अभी again it is a logical question. When will, क्या हुआ? 1186, absolutely. When will this velocity be maximum? Anyone in the class, ये velocity maximum कब होगा सर? बोलो सर. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आंसर्स दे रहे सर. आई एम सो हैप्पी. ये वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा? बोलो सर. अरे यार, दिस विल बी मैक्सिमम. ये कैनॉट, दिस कैनॉट बी चेंज. ये तो फिक्स है. दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस इज मिनिमम. करेक्ट और नॉट सर? Exactly. At the stagnation, excellent sir. At the stagnation state, it is expanded बोला. At the stagnation, बहुत बढ़िया sir. So this will be maximum when this value is minimum. ये maximum होगा. कहाँ गया वो? Maximum velocity. ये velocity maximum तभी होगा
जब ये मिनिमम होगा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? थियोरेटिकल बोला है, थियोरेटिकली ये मिनिमम कब होगा सर? थियोरेटिकली 0 केल्विन। ऑफ कोर्स 0 केल्विन रीचिंग इज इम्पॉसिबल, 0.000, सो ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो स्टैग्नेशन स्टेट पे मैक्सिमम वेलोसिटी इज द कॉन्सेप्ट क्लियर सर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर सर? टी मिनिमम ये केल्विन में है सर, प्लीज नोट डाउन, ये केल्विन में। आई नो दैट जीरो इज नॉट पॉसिबल, तो कितना होगा? 0.00000 एज पर सेकंड लॉ, रीचिंग 0 केल्विन इज इंपॉर्टेंट इम्पॉसिबल, तो 0.0 मतलब ये लगभग नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। तो क्या होगा सर? V1 स्क्वायर इज ये होगा, तो V1 स्क्वायर बाई 2000 इज इक्वल टू CP इज गिवन। देखो देखो, when you have divided with 2000, इसका मतलब CP को किस में लेना है? किलो जूल पर केजी। अगर आप 2000 से डिवाइड नहीं करते, इट शुड बी इन जूल। इज इट क्लियर सर? बहुत बढ़िया। तो दोबारा बता रहा हूं सर, व्हाई हैव यू डिवाइड? लॉजिकली मैं बताता हूं सर, स्टैग्नेशन स्टेट पे है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी? मतलब जो भी एंथैल्पी है, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी हेड। समझ में आ रहा है सर? वॉट एवर मैक्सिमम, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी ना, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। सो वॉट एवर द स्टैग्नेशन इज देयर, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी। तो यही है सर, दिस शुड बी जीरो। तो CP V1 स्क्वायर बाय 2000 इज, CP कितना है सर? 1.005। सो व्हाई आर यू रेटिंग 1.005? क्योंकि व्हेन यू डिवाइड विद 1000, ये 2000 से डिवाइड किए, तो इसका मतलब है किलो जूल में है, इंटू T नॉट इज 700। सो एवरीथिंग इज नोन, V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2000 into 1.005 into 700. What's the value of V1 sir? V1 कितना आ रहा है सर? 1186। बहुत अच्छा चल रहा है सर, 1186 is the right answer। बहुत बढ़िया। Is it okay sir? ये वाला ले लो। नेगेटिव मार्किंग होता है, क्यों नहीं होता है? ये करो, ये करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो टेक दिस, आंसर करो, प्लीज आंसर। सी MSQ दे रहा हूं का मतलब बार्क में नहीं आता MSQ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन सर। बताएंगे सर, डोंट वरी। व्हाट इज आइडियल गैस, व्हाट इज परफेक्ट गैस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस, परफेक्ट गैस, सेमी परफेक्ट गैस, ठीक है, ऑल दिस आई हैड एक्सप्लेन। तो एक बार चाहिए तो मेरा वैन डर वाल इक्वेशन का एक वीडियो दूंगा आपको, देख लेना, ठीक है। हाँ, देखो सर, द सिस्टम अंडरगो फॉलोइंग प्रोसेस, ओके। क्या बोला है? कंसिडर सिस्टम ऑफ सर्टेन एनक्लोजडनेस। तो सवाल ही नहीं है, आप हाउ कैन यू गिव AC आंसर सर? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, तो आप बताने, आई डोंट नो, सवाल ही नहीं। ये पता नहीं क्या पूछ रहा है ये, तो व्हाट इज हैपनिंग सर? रट रहे सर आप, सवाल ही कंप्लीट नहीं हुआ, आप आंसर दे रहे का मतलब ये क्या हो रहा है? हे भगवान, देखो क्वेश्चन देखो, consider a system consisting of certain amount of perfect gas enclosed in a cylinder fitted with frictionless piston. The system can undergo following process। देखो, expansion with finite pressure difference, finite means अच्छा खासा difference, whenever the pressure difference is a good amount, the process will occur in a faster manner। तो process whenever it is fast, it is irreversible। ओके ये इरिवर्सिबल है सर, IRR। ओके, यहां पे कंप्रेशन विथ इन्फिनिटेसिमल प्रेशर, मतलब बहुत कम प्रेशर डिफरेंस है, बहुत कम, सराउंडिंग सिस्टम में इतना अंतर है, तो तुरंत यू कैन रीच सराउंडिंग, देयर इज ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। एक बार देखो, यू आर टेकिंग स्टेप्स, आप सीडी ले रहे हैं, देखो एक बार, ये स्टेप से ये सीडी गए, सो कैन यू कम बैक इन द सेम पाथ इन ए रिवर्स मैनर? यस। तो अगर आप ऊपर से कूद रहे,
Can you come back along the same path? When the difference is large, you cannot come back. It will be irreversible. तो अगर difference कम है तो ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे. देखो एक बार, तो कंप्रेशन विथ इन, ये तो रिवर्सिबल होगा. ठीक है सर. हीट ट्रांसफर विथ फाइनाइट. फाइनाइट मीन्स अच्छा खासा, गुड. So whenever the temperature difference is large, good temperature difference, अच्छा temperature difference है, तो it will be irreversible. तो ये irreversible होगा सर. अब देखो, हीट ट्रांसफर विद इन्फिनिटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस, बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये क्या होगा सर? ये होगा रिवर्सिबल. अब सवाल ये पूछा है कि विच वन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल. तो आप बताओ विच वन इज रिवर्सिबल सर? 2 and 4. Yes, it is 2 and 4. Where is this? 2 and 4. D option is the right answer. Is it okay, sir? Is it okay? Yes. पढ़ो सर. चलो देखते हैं how many of you can do it. Let's see how many of you can do this. यश पटेल, यस, ट्रू ट्रू ट्रू. अब हम मान के चलते हैं सर, थोड़ा सा मतलब when the difference is very very small, yes, we can assume. ये करो, देखते हैं सर. बार्क में कुछ लेंदी क्वेश्चंस होते हैं सर, यही तो बोल रहा था मैं. तो देखो कितना सूटेबल कॉम्बिनेशन है, कुछ लेंदी कुछ शॉर्ट. देखो अच्छा कॉम्बिनेशन है सर. ये अच्छा लग रहा है आपको? आर यू एंजॉइंग माय डियर स्टूडेंट्स? आर यू एंजॉइंग? से समथिंग. आर यू एंजॉइंग? शुड आई कंटिन्यू? हे भगवान. वेरी गुड, टेक दिस. The pressure and temperature before compression. What does before compression mean? Wait a second. Let me draw the cycle. Yes. अब देखो बोला क्या है, देखेंगे. देखो एक बार, द बिफोर द कंप्रेशन स्ट्रोक द प्रेशर इज, ओ माय गॉड, एक सेकंड एक सेकंड. जनरली द इनटेक प्रेशर वी टेक इट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अराउंड 100 किलो पास्कल. यहाँ पे कुछ अलग दिया है सर, 200. जो दिया है वो ले लो. P1 is 200 and the temperature is 26.85. First you convert in Kelvin. So pressure is 200. P1 is 200 kilopascal and the temperature is, what is T1 sir? What is T1? What is T1? कहाँ गया रे वो क्वेश्चन? पता नहीं रे कहाँ गया रे. इसको ऐड करना सर, कितना आ रहा है सर? T1 26.85 केल्विन में कन्वर्ट करो. 26.85 केल्विन में कन्वर्ट करो. अरे आप लोग क्या कर रहे हैं सर? केल्विन में कन्वर्ट करो. 299.85. सर आपको ये नेक्स्ट गेट के लिए भी काम आएंगे सर, इफ यू आर सीरियसली राइटिंग. ओके. The combustion process is assumed to be constant volume. What does combustion mean? Heat supply. The heat supply is assumed to be at constant volume, where 1.02 megajoule of heat is added per kg. देखो, you convert this in kilo, this much heat is added. So you multiply with 1000, you will get it in kilojoule per kg. So 1020. I have converted from megajoule to kilojoule. 1020. तो ये हो गया आपका heat supply is 1020 kilojoule per kg. Excellent sir. This much heat is supplied. और क्या है? The cycle efficiency is 50%. ठीक है सर, कोई बात नहीं. हाँ, the adiabatic index CVR are assumed to be constant during process and दे रखा है सर. इधर देखो,
gamma is given as 4 by 3, CV is 0.85. Unlike our regular values, पता नहीं ये fluid कौन सा है, we don't know, but we can treat it as ideal gas, कोई दिक्कत नहीं सर. तो gamma is 4 by 3, gamma is 4 by 3 and CV is 0.85. ठीक है सर, CV is 0.85, of course किलोजूल. क्या पूछा है? The maximum pressure in, देखो यूनिट देखो, the maximum pressure in मेगा पास्कल. तो which pressure is asked? So he is asking P3. कैसे करेंगे सर, बोलो. How to do? आप बताइए सर. How to proceed? You want this pressure. एक बार देखो सर. What is 2 to 3 process? It is a constant volume process. So if I apply ideal gas equation, PV is equal to MRT. 2 to 3, volume is constant. Mass is already constant, temperature R is constant, volume is constant. So can I write pressure is directly proportional to temperature for 2 to 3? Yes, sir. So we can write this as P3 by P2 is equal to T3 by T2, because, and please note on that I have taken ideal gas equation, temperature should be strictly in Kelvin. तो मेरे प्यारे दोस्तों, in order to find out the peak pressure, maximum pressure P3, I need three things: T3, T2 and P2. So target karo sir. Let us target. So how can I establish these values? So the target should be on P3, in order to find out P3, I need P2, T3, T2. बताओ सर. हाँ बोलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइए सर. हाउ डू वी कैलकुलेट? देखो, इफ आई कैलकुलेट द कंप्रेशन रेशियो, कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व? अगर मैं कंप्रेशन रेशियो को कैलकुलेट करता हूं, यस सर, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. कैसे? T1 1 to 2 is reversible adiabatic compression. तो T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1. Okay, sir. So T2 will be equal to T1 into V1 by V2 power gamma minus 1. But what is V1 by V2? It is compression ratio R power gamma minus 1. So this is our value of T2. ठीक है सर. तो T2 कैलकुलेट करने के लिए T1 चाहिए, R चाहिए, गामा चाहिए, कोई बात नहीं. सो एक काम करते हैं सर, आराम से सब लोग देखो. somehow already T1 is given. somehow if I calculate R, the problem is solved. देखो एक बार. तो efficiency is equal to, or for auto cycle, 1 minus 1 by R power gamma minus 1. तो already the efficiency is given as 50%. तो 1 minus 1 by R power gamma is 4 by 3. Don't take 1.4. So gamma is 4 by 3. So can you give me the value of compression ratio? Anyone? Anyone with compression ratio, sir? कितना आ रहा है सर? What is the compression ratio, sir? ये तो डायरेक्ट है सर, मैं बोल रहा हूं हाफ, तो ये 2 होगा 1/2, तो 2 पावर 1/3. R is 2 power R power 1/3 is 2. R should be 8 ना? R तो 8 पॉइंट क्यों आ रहा है सर? डायरेक्टली 8 आ रहा है सर. क्या स्टूडेंट्स है रे बाबा, मजाक कर रखा है सर आपने. कैलकुलेशन को तो मजाक कर दिया. इधर देखो, 0.5 is 1/2 is equal to 1 minus 1 by R power 4 minus 3 is 1/3. So therefore 1 by R power 1/3 is equal to half. So therefore R power 1/3 is equal to 2 or R is equal to 8. तो यहां पुट करना सर. So T2 is equal to, T1 is 299.85 into R is 8 power gamma is 4/3 minus 1. क्या आप मुझे T2 का वैल्यू दे सकते सर? Can anyone give me the value of T2? सर no one is giving. बुरा लग रहा है सर. थर्मोडायनेमिक्स आई एम स्टार्टिंग सून. मैं स्टार्ट करूंगा सर. क्योंकि अब मटेरियल साइंस का प्लान चल रहा है. जैसे मटेरियल साइंस होता है तो आई विल स्टार्ट. हाँ, कितना आ रहा है सर? T2 599.7. ठीक है, ये हो गया सर. लेट मी इरेज सर, इसको मैं थोड़ा हटा दूंगा. ठीक है,
कोई बात नहीं सर. तो then once T2 is known, let me calculate P2. How to calculate P2? देखो, what is 1 to 2 process? It is reversible adiabatic. So can I write P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma? You can also write T2 by T1 is equal to P2 by P1 gamma. I can write that also. तो यहां से भी कर सकते सर. Because 1 to 2 is reversible adiabatic. अगर reversible adiabatic है, I can use 3 equations. ध्यान से सुनो. In order to apply the equation PV power gamma is equal to constant, you need 3 conditions. The process must be reversible, the process must be adiabatic, and it should be, the working fluid must be an ideal gas. So from PV is equal to PV power gamma is equal to constant, मैं आपको और 3 equations भी derive किया सर, और दो. What are those? T1 V1 gamma minus 1 is T2 V2 gamma minus 1. T2 by T1 is equal to P2 by P1 gamma minus 1 gamma. ये भी derive किया सर. बहुत बढ़िया. देखो, answer, someone gave the answer. 9.6 is the right answer. बहुत खूबसूरत सर. P2, वाह 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 वाह, क्या स्टूडेंट्स है रे, बहुत मजा आ गया. So P2 is equal to P1 is 200, and what is V1 by V2? Compression ratio R, that is 8. Gamma is how much sir? 4 by 3. So I think it is 2 cube. तो cube cube निकल गया. So I think it is 16 to 32. Can I write P2 as 3200 kilopascal? Should be correct, I suppose. P2 is also known. So in order to calculate P3, I simply need T3. Can you suggest me as to how to find out T3? Anyone? देखो, heat supply is given. Heat supply is given by CV. It is a constant volume heat addition, constant volume. So it is given per kg. Per kg means mass is taken as 1. That's therefore I am not writing M. So CV into, we are supplying from 2 to 3. It's a constant volume process. Therefore it will be T3 minus T2. Absolutely fine. So heat supply is equal to, what is CV sir? 0.85. And T3, already heat supply is given. How much is that heat supply sir? कितना heat supply दिया सर? 1020 and T3 minus T2, and T2 is 599.7. So therefore I want the value of T3. Can you give me the value of T3 sir? Anyone with T3? I want T3. No one is giving sirs. No one is giving. What is T3? 1799.7. Okay, once T3 is known, the problem can be solved. देखो, यहाँ put करो sirs. Let us put it here. Once the value of T3 is known, put it here, यहाँ पे. So P3 by P2 is 3200 is equal to T3 by T2. What is T3? 1799.7 by T2. What is T2? 599.7. So यहाँ से आपको P3 का वैल्यू मिल जाएगा. So as this is in kilopascal, ये भी kilopascal में आएगा. I think 9603 kilopascal, or but he is asking in megapascal, 9.603 MPa. Anyone got this answer, sir? वाह, wonderful student sir, wonderful student sir. वो megapascal में पूछा सर. बहुत बढ़िया स्टूडेंट सर. आंसर यस आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? यही तो है, इंटेलिजेंटली इसको स्किप करना है. यही तो बता रहा हूं मैं आपको. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. But it may not be such a big question, but you should know how to calculate. Right, next. Not correct. Carnot engine is reversible. This is correct. It is reversible. It is correct. The engine efficiency is independent of, no.
Carnot engine efficiency, reversible engine efficiency depends only on temperature limits. It is incorrect. है ना सर? आंसर दे रहा, बहुत बढ़िया सर. नेक्स्ट, this engine has the highest efficiency among all engines. Yes, it is correct. The total entropy change for the system increases at the end of each. Why am I highlighting this cycle? Batao sir. Why am I highlighting this cycle? The change in property for any cycle is always zero. Properties are point functions. So in a cycle, the initial point and final point is same. When points are same, properties are same. When properties are same, change in property is zero. Entropy is a property. So the total change of this system, he's talking about the system. He's talking about the system. Increases after the completion of cycle. Galat sir, it remains same. So therefore it is incorrect. तो पूछा क्या है सर? Which one is not correct? This is not correct. This is not correct. I think BD is correct. Next question करो सर. आज तो हम मूड में है. And if you do this question, I'll be the happiest person, sir. If you do this question, I'll be the happiest person, sir. Come on, come on, come on, come on. Come on, read this. Come on, sirs. Thank you, Jaiswal. I'm humbled and I will do much more. I'll do much more. ठीक है, ये पढ़ो. ये पढ़ो सर. Sir, I'll be the happiest person if you do this. देखते हैं सर. Let me see how many of you can answer. Heat is available at the rate of 2 kilowatt from a reservoir at 400 Kelvin. There is a reservoir at 400 Kelvin. From that reservoir, 2 kilowatt of heat is extracted. A two-stage process harnesses, harness का मतलब वहां से लेना, this heat to produce power. Stage 1 and 2 reject heat at 360 and 3, मतलब it is something like engines in series. Stage 1 से power आ रहा है, stage 2 से power आ रहा है. So what is he saying? Stage 2 is driven by the heat rejected by stage 1. If the overall efficiency, overall process, मतलब उस complete cycle का efficiency is 50% of the corresponding Carnot cycle, the power delivered by the process in actually it should be a cycle. एक cycle में develop कर रहा है. Heat engine operates on a cycle. एक बार पढ़ो sir, they are in series. एक बार पढ़ो. What is the higher temperature? 400. What is the intermediate temperature? 360. What is the lower temperature? It is 300. So from the higher temperature of 400 Kelvin, how much heat is extracted? It is 2 kilowatt. Okay, the overall efficiency is 50% of the Carnot wala efficiency. So what is the power developed during this total power developed? देखो एक बार, देखो सर, मस्त क्वेश्चन है सर. Let us take this as 400 Kelvin. ठीक है सर.
and let this be Q1. Already this is given as 2 kilowatt, and this is engine E1. Let it develop work W1, let it reject Q2, and then there is a temperature of 360. Clearly he said there is a second engine. Whatever the first is rejecting, the second is taking. देखो, engine E2, and this is W2, and this is Q3, and this is 300 Kelvin. ठीक है सर, बोला क्या है सर? मान लो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज लिसन, 0.25 is the right. क्या बच्चे हैं रे, seriously. Satish, how are you? He is G Satish. Shall I tell you his track record? Cleared NPCIL, cleared ISRO, IES 15th rank, IES 3rd rank. Just now he met me. Just now. He is in MES. Who knows? One more surprise may be witnessed this year. Who knows? Something is about to come. Who knows? You know, he loves me a lot. मतलब देखो अब मैं क्या बोलूं कि whenever he is in Hyderabad, he'll definitely try to meet me. He's a genuine hard worker. Definitely बहुत सारे students ने पूछा है इनका इंटरव्यू के लिए, तो I'll take his interview, and that is only for your benefit. That is only for your benefit, okay? So he works so hard, you know, he is a genuine hard worker. Definitely I'll conduct his interview and I'll present in front of you. And I took inputs from him, like he cleared BARC written examination. तो उनको ये भी पूछा मैं कैसा एग्जाम होने वाला है ना? बिल्कुल करेंगे सर. इस बार और एक सरप्राइज भी दे सकते सर, क्या पता. देखो क्या होने वाला है. ठीक है, चलो, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है सर ये. देखो, देखिए, चलो ये वाला क्वेश्चन. ठीक है सतीश, ओके. डिड यू रीच होम सतीश? You left at I think you left at, from my house you left at 7:55. Did you reach home, Satish? You reached home? Okay, कोई बात नहीं. ये अच्छा क्वेश्चन है सर. देखो देखो एक बार कैसे करेंगे सर. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये रिवर्सिबल है, कार्नॉट है, कार्नॉट में क्या होगा सर? Q1 by T1 is equal to Q2 by T2, because this is for Carnot or reversible, है ना सर? Carnot or reversible. बाय बाय, वेरी गुड. चलो, विल मीट अगेन सतीश. चलो, Q1 ये देखो, दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल. ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के लिए होगा. Q1 is to T1, this is T1, this is T2, and this is T3. ठीक है सर. So Q1 by 400 is equal to Q2 by T2. What is T2? 360. Can you give me the value of Q2, sir? Can anyone give me the value of Q2? कितना आ रहा है सर? 9. समझ में नहीं आ रहा मुझे. Is it 1.8 kilowatt? Is it correct, sir? Is Q2 1.8 correct? Is it 1.2? Yes. 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 Next. 1.2. और एक सर, Q2 by T2 is equal to Q3 by T3. Q2 is 1.8 by T2 is 360 is equal to Q3 by T3 is 300. Can you give me the value of Q3, sir? Q3. अरे यार, no one is giving. No one is giving Q3. Q3, sir. Is it correct? Yes, correct. Now you tell me what is the work. देखो, Q2 is 1.8 and Q3 is 1.5. तो ये कितना आ रहा है सर? ये कितना आ रहा है? 2 minus 1.8. I think it is 0.2. Is it correct? देखो, 1.8 minus 1.5, it is 0.3. So आप बताइए सर, what is the total work? The total work is W1 plus W2. The total work is देखो, 2 minus 1.8 is 0.2. 1.8 minus 1.5 is 0.3. So total work is given by 0.2 plus 0.3. So the total work is 0.5 kilowatt. ठीक है. But be careful, sir. Be careful. Easy. देखो एक सेकंड.
This is related to all reversible. ये पूरा, because you calculated everything from Q1 by T1, Q2 by T2, everything from reversible. So this is my reversible work or maximum work. So can I calculate the Carnot efficiency, reversible efficiency? Yes. So the maximum work is 0.5, output, and the input is 2. So what is the Carnot or maximum efficiency? It is equal to kitna aa raha sir? 0.25 if I am not wrong. 0.25 exactly. So what will be the actual efficiency, sir? He clearly said the actual, is it clear, sir? So whatever we have done, it is based on Q1 by T1, Q2 by T2, it is for reversible. So this is giving me reversible work, this is giving me reversible work. The total reversible work is this. So efficiency will be output by input. Output is 0.5, input is 2. So therefore, this is my efficiency, maximum efficiency. But you know, the system is operating at 50% of maximum. So the actual efficiency is given by anyone. So 0.25 into 50% is 0.5. So the actual efficiency is equal to 0.125. So what will be the actual efficiency? Efficiency will be equal to actual work by heat supply. What is the heat supply, sir? What is the input? Input is not changing. For that input we are calculating. So therefore it is 2. So kitna aega, sir? So actual efficiency is equal to how much is this, sir? Kitna aa raha hai? 0.25 is the right answer. Anyone got this answer? किसी को आया सर ये आंसर? किसी को आया सर? बहुत बढ़िया, ये ले लो. चलो ये लेने के बाद अब एक रिक्वेस्ट है सर आपको. In the next session, I'll give some tougher questions as this is the first class. So I have given reasonably good level questions. In the next session, थोड़ा high level के देंगे. Will you be ready, sirs? Okay, correct. Will it be okay, sirs? Sir, in previous question, why 0.125? Where 0.125? देखो sirs, देखो एक बार. He said something. If the overall efficiency is 50% of the Carnot, whatever you have calculated, look at carefully, whatever these values are calculated, they are with respect to reversible. This is used only for reversible, मतलब Carnot का है. Whatever values you calculated, reversible. So reversible work is 0.5. So what is the efficiency? Actual work, which is 0.5 by input is 2. So this is the actual efficiency. Very good. But the system is operating on 50% of the Carnot efficiency. The Carnot is 0.25 and the actual efficiency is 50% 0.25 will be 0.125. Is it okay? Is it okay? Very good, sirs. ये पढ़ो. Answer दो, sirs. Please make it fast. हाँ, you can. मैं शेयर करता हूँ सर ग्रुप लिंक. तो ग्रुप लिंक, हाँ जी सर, ये करो. I'll share sir, don't worry. लेकिन कैसा शेयर करना है सर? जो भी those who have joined the group, can you share the link here, live link? So मेरा सीक्वेंस है सर थर्मो, HMT, सॉम. आई रिपीट सर, क्योंकि सॉम HMT थर्मो से बहुत ज्यादा फ्लूइड से ज्यादा आते हैं, इसलिए लेट अस कंप्लीट दिस. सो आप थर्मो और एक सेशन होगा, उसके बाद हीट ट्रांसफर का होगा सर. प्लीज रिवाइज हीट ट्रांसफर. ओ क्यूआर मुझे पता नहीं सर, ये मैं क्योंकि आई एम नॉट दैट स्मार्ट. ठीक है, ये कंप्लीट करो सर. देखो डोंट वरी, ए सिंगल सिलेंडर सीआई इंजन. सीआई का मतलब ये डीजल इंजन होता है सर. हाँ, ओके. इट हैज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ कितना दिया सर? देखो एक बार. What is the mean effective pressure? 1 megapascal. Can I write 1 megapascal as 1000 kilopascal? Yes, sir. And the compression ratio is 21. The engine has a clearance volume of 5 into 10 raised to minus 5 meter cube. The heat added at the constant pressure is
2 kilojoule. Let me tell you very clearly. Heat added at constant pressure. It's a compression ignition means diesel engine. Okay, diesel cycle. What is the efficiency? ठीक है सर, कैसे करे सर? सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट जनरली, मतलब बार्क की बात बता रहा हूं सर, सॉम एंड एचएमटी, इसको नेग्लेक्ट मत करना सर. पता नहीं वाई दे सेलेक्ट दिस. सॉम, एचएमटी एंड फ्लूइड ऑल्सो, ये थोड़ा हम देख लेंगे. ठीक है. अल्टरनेट डेज सर, बिकॉज आई थॉट ऑफ टेकिंग 1 1 आवर डेली. तो आज तो 2 घंटे हो गए, समझ गए ना? 2 दिन का कोटा हो गया है ना सर? ठीक है. तो कितना आ रहा है सर? 50%. देखो, हाउ कैन आई डू दिस? द एफिशिएंसी इज गिवन बाय net work by heat supply. Already the heat supply is given. Suppose I calculate the net work, the problem is solved. But everyone knows mean effective pressure is equal to net work by swept volume. Anyone remembers this? Yes, sir, I remember. So let's try to calculate the swept volume. So compression ratio is equal to 1 plus Vs by Vc. So the compression ratio is 21. 1 plus the swept volume is Vs and Vc is 5 into 10 power minus 5. So आपको Vs का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा सर? कितना मिलेगा? 20. 20 into 5 is 100, मतलब 10 power minus 3 मिल रहा है सर. 10 power minus मीटर क्यूब, ये है स्वेप्ट वॉल्यूम. तो एक बार स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया तो आई कैन इजिली कैलकुलेट द मीन इफेक्टिव प्रेशर. मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दिया सर? 1000 किलो पास्कल is equal to net work by swept volume. What is the swept volume? 10 power minus 3. तो ये multiply करो तो net work will be equal to, if I multiply these two I am getting 1. What will be the unit? What will be the unit? It is ये किसमें है सर? किलो पास्कल में है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू, देखो दिस प्रेशर इज इन किलो पास्कल. देखो एक बार, दिस प्रेशर इज इन किलो पास्कल, नेटवर्क आई डोंट नो, दिस वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब. तो ये मीटर क्यूब इधर आएगा सर, किलो पास्कल इंटू मीटर क्यूब. This will be equal to किलो न्यूटन मीटर इज किलो जूल. सो ये वर्क आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 किलो जूल. ठीक है सर. So efficiency will be equal to net work is 1 and the heat supply is 2. So you are getting this as 50%. I think someone got this answer. Very good sir. Very good. है ना सर? ये करो. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर. रिवर्सिबल फ्लो. For a steady flow process, what is the equation? Work minus VDP. है ना सर? माइनस VDP. ठीक है. ये डायरेक्ट है सर, आई विल नॉट डू इट. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. इट्स अ सिंपल, आपके हाथ में छोड़ दे रहा हूं. एक अभी जो बच्चे सो करेंगे तो ये कर सकते हैं सर. कैन यू डू दिस? लास्ट एक अच्छा क्वेश्चन देके हम क्लोज करेंगे सर सेशन. ठीक है. हाँ, ये आंसर करो सर. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज टेम्परेचर, दिस इज एंट्रोपी. ये क्या है रे? ठीक है.
व्हाट इज ए डैश प्रोसेसर? ए डैश, इसमें कोई डाउट है सर? इट इज कांस्टेंट टेम्परेचर. व्हाट इज बी डैश? वर्टिकल आइसेंट्रोपिक. व्हाट इज अरे यार सी एनीवन? देखो, ऑन टीएस डायग्राम दिस प्रोसेस हैज मोर स्लोप. अगर आप देखेंगे इसका स्लोप ज्यादा है, ग्रेटर स्लोप इज कांस्टेंट वॉल्यूम. सो डी डैश इज कांस्टेंट वॉल्यूम. So therefore it is isochoric. So C dash, देखो C dash less slope, it is constant pressure. You know very well. इसका स्लोप होता है T by CV और इसका होता है T by CP. As the slope of as the CP value is more than CV, it is in denominator, the slope is less. So C dash is isobaric. Is it correct, sirs? Is it correct, sirs? Should be correct, I think. Should be correct, na? Okay. ये वाला लेके कर दो, कंप्लीट करो. कौन सा वाला लेके कर लेंगे? कल कर, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर. हाँ देखो, टेक दिस. So whatever the questions are left, I'll give you, and group का link I ask someone to share. I'll please थोड़ा stop करेंगे सर, please stop discussing. कितने, I think did we solve around 15-16 questions? So is the session okay, or do you want any changes to be made? बोलो आप, is the session okay or do you want me to make some changes? रेस्पॉन्स शीट शायद कल से लेकर 20th के बीच में कभी भी आ सकता है सर. फ्रॉम टुमारो टू 20th. तो कल से लेकर 20th के बीच में कभी भी आ सकता है सर. ठीक है. एनी सजेशंस टू बी मेड फॉर आवर क्लासेस? बोलिए सर. वन मोर क्लास आई विल टेक ऑन थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन नेक्स्ट सेशन थोड़ा टफ ले लेंगे सर. ओके. उसके बाद आई विल स्टार्ट एचएमटी. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिवाइज एचएमटी. ठीक है सर. थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस थोड़ा टफ ले ले, मतलब जो all concepts involving. Okay, so is this speed okay? क्या ये स्पीड ओके है? बेस्ट चल रहा है सर. डे आफ्टर टुमारो alternate day. So if I take 1 hour class, it will be daily. If I take 2 hours, it will be alternate. Is it okay, sir? I'll be sharing in group. मतलब ग्रुप को, अगर किसी को ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, बोल देना बार्क ग्रुप. ठीक है. I'll add. Okay, and after adding I'll share the PDF. ठीक है सर. एकदम जबरदस्त. थैंक यू बेटा. चलो आज के लिए बस इतना. सो इस बार और अच्छे क्लासेस करेंगे. सो डोंट वरी. सो प्रिपेयर सिंसियरली, क्योंकि अगर गेट का एग्जाम हो गया, अच्छा नहीं गया या अच्छा गया, डोंट वरी. सो कंटिन्यू योर प्रिपरेशन. सो नो मैटर व्हाट, तो व्हेन यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन तभी, because the one who met me today, Mr. Satish, who got all India third rank in engineering services, so you know, like he always worked continuously, he never gave any gap. So this year आप देखेंगे कुछ सरप्राइज तो होने वाला है. Okay, he just came to discuss certain things with me. ठीक है. चलो I'll share sir, I'll share. अभी कुछ पूछना है सर आपको? ग्रुप लिंक मैं कैसा शेयर करूं रे, मुझे पता नहीं इसको शेयर कैसे कर दे. हाउ मेनी ऑफ कल नहीं परसों है सर. ओके, हाउ टू शेयर ग्रुप लिंक? यहाँ पे शेयर कर सकते सर. मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन उस दिन से नहीं हो पा रहा है सर.
नेम बोलिए सर, किन का नाम बोलूं रे? जस्ट ये नंबर पे बार्क ग्रुप बोल के डाल देना, ग्रुप का नाम। अच्छा, ग्रुप का नाम बार्क, ठीक है सर। यस यस, सही बोले आप, नहीं हो पाएगा। आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम। यस, ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं हो पाएगा शायद, आई थिंक। तो मैं ऐड कर दूंगा सर, दोज हु आर नॉट इन द ग्रुप आई विल ऐड। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, you start your HMT preparation, so that you start your HMT preparation so that continue चलेगा, okay? सर लाइव के बाद कमेंट पे पिन करिए। अच्छा, चैनल पे लिंक डाल दीजिए। किस चैनल पे? अच्छा, ओके, मैं पूछता हूँ, बिकॉज हम लोग तजुर्बेकार नहीं है ना रे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे तो हम नादान है, बिकॉज हमें कुछ आता ही नहीं, यूट्यूब का काम सीख रहे हैं अब, है ना सर? इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा सर, कंडेंसेशन बॉइलिंग में, ठीक है। नसल्ट थ्योरी ऑफ कंडेंसेशन बताऊंगा, व्हाट आर द अजम्पशंस मेड, बिल्कुल करवाऊंगा सर, ओके। लेकिन द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड इज यू शुड बी सिंसियर सर। एक क्या होता है ना, so if you want if you want to achieve something great and big, there has to be consistency and discipline. If that is lacking, so देखो, we too need some motivation. You should motivate us, we should motivate you, it should be mutual sir. तो आज मुझे ठीक लगा कि लोग मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब लाइक राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड, अच्छा लगा। यस, हीट एक्सचेंजर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सर, ऐसा मत बोलो कि ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर्स इन कन्वेक्शन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है सर, ओके। एनीथिंग मोर टू बी आस्क्ड? And one more request, sir. Once the session is over, please share your response in the form my group. ये इसको share करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ sir. Share your comments whether the class was good or not. मतलब आप क्या उम्मीद से आए, वो satisfy हुआ या नहीं. At least you share comments. तो एक मुझे पता चलता है कि where we stand, because no one is perfect. Yes, I'll cover theoretical questions. सही बोले आप. Okay, अभी छोड़ दूं फिर? Shall I say goodbye? तो कल सुबह हमारा एमडी का क्लास है और सॉम का क्लास है, सो प्लस पे हम मिलेंगे। एनीथिंग मोर? सो आई विल ऐड एवरीवन टू दिस ग्रुप सो दैट आई विल शेयर द लिंक, ठीक है सर? अच्छा लगा मुझे। क्वेश्चंस वेर गुड ना? क्वेश्चंस ठीक थे? क्वेश्चंस ठीक लगे? हाँ आकाश, आई एम स्टार्टिंग सून, आई विल स्टार्ट। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बोलो। बहुत मस्त था, चलो फिर। तो आई एम एंडिंग द सेशन, एंड प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना कर लेना। द ग्रेटर द लार्ज, मतलब योर प्रैक्टिस शुड बी अ लॉट, यू शुड स्ट्रगल अ लॉट, डोंट गेट satisfied easily, so easily. Keep working, we are there to support you, okay? Unacademy team is there to support you, okay? चलो फिर, bye bye. I'll add everyone to the group. Okay, sir? I'll add everyone to the group. Questions are very good and conceptual. Thank you. Thank you. So जो लोग भी मैसेज किए, मैं उनको अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद ऐड करूंगा. I'll add after some time. Okay? चलो, bye bye. Thank you. I'm ending this session.